अस्सलाम वालेकुम। आज चैप्टर नंबर 3 इन FA2 बुक में स्टैटिस्टिक्स में डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास बायनॉम डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हम टॉपिक करेंगे बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड एग्जांपल 3.13 एग्जांपल 3.13 इन लेक्चर नंबर 62। Find the mean variance and standard deviation of the binomial distribution whose parameter are n and p is given in the question. The mean is 20 and the probability of success p is equal to 3 by 5. You know that the binomial distribution have two parameters n and p. So the binomial distribution parameter value is given in the question. So find the mean and variance and standard deviation of the binomial distribution. Clear? So what is the mean of the binomial distribution? The mean of the binomial distribution is NP, clear? And the variance of the binomial distribution is NP and Q. And standard deviation is just take the positive square root of the variance. So the variance is equal to under root NP and Q. So the n and p value is given, so put this value into this example mean and variance and find out the mean. What is the mean? The mean of the binomial distribution is np. So the n is given in the question. The n is equal to 20 and the p is equal to 3 by 5. So what is the q? Q is equal to 1 minus p. Clear? तो 1 minus 3.5 3 divided by 5. तो हमारे पास क्या आएगा? 1 minus 3 divided by 5. The answer is 1 minus 3 divided by 5. So the answer is 0.4. Clear? आप पॉइंट्स में भी लिख सकती हैं और आप डेसिमल में भी लिख सकती हैं. तो यूजुअली अगर मैं एलसीएम लेती हूँ तो 5 minus 3 is equal to 2 by 5. Clear? So what is the mean? The mean is NP. The n value is 20 and the p value is 3 divided by 5. So the answer is 5 ones are 5, 5 fours are 20. So 3 fours are 12. So the mean is 12. The variance is equal to n, p and q. So what is n? N is 20 multiply by p. What is the p value? 3 divided by 5 multiply by q. What is the q value? 2 by 5. Clear? So 20, 3 2s are 6, 3 2s are 6 divided by 5 5s are 25. So 20 multiplied by 6, 20 multiplied by 6, the answer is 120 and divided by 25 divided by 25. So the answer is 4.8. So the variance is equal to 4.8. And the standard deviation is equal to under root of variance. So the under root of 4.8 under root of answer is equal to 2.190. So 2.190. ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन था. हमारे पास जस्ट मीन फाइंड करना था, वेरियंस फाइंड करना था. पैरामीटर की वैल्यूज ऑलरेडी गिवन थी इन क्वेश्चन में, तो हमने मीन फाइंड किया, एन पी को मल्टीप्लाई किया और क्यू फाइंड किया. पी से हम वैल्यू गिवन होती है तो आप इजिली क्यू की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. क्यू की वैल्यू फाइंड किया, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आ गया? मेरे पास वेरिएंस आ गया और मैंने उसका अंडर रूट लेके मेरे पास क्या आ गया? स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मैंने तीनों पार्ट्स जो हैं वो फाइंड आउट कर लिए हैं. ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.